हाय गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कल से बहुत इंटरेस्टिंग T20 सीरीज शुरू होने वाली है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच। 3 मैचेस होंगे ऑन द 4th, 6th एंड द 8th और ये सारे गेम खेले जाएंगे एट द रोज बाउल स्टेडियम, साउथहैम्पटन, इंग्लैंड। वंस अगेन मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग क्रिकेट बेटिंग टिप्स, जिसको फॉलो कर आई एम वेरी श्योर यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, फर्स्ट इनिंग स्कोर ओवर 145। नाउ बिफोर द गेम स्टार्ट्स, Bet365 आपको ऑप्शन देता है टू बेट ओवर एंड अंडर 165, बट आई विल रिकमेंड 165 पे बेट ना लगाएं बिकॉज इट्स अ बिट ट्रिकी। बट जैसे ही गेम शुरू होगा, Bet365 विल गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट इनिंग स्कोर एंड यू विल सी एट द टॉप एन ऑप्शन गिवन between 145 to 50. उसका रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा कम होगा, बट विद द काइंड ऑफ बैट्समैन वी हैव इन बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड टीम, 145 should be a piece of cake. So make sure when you see that option, you bet on it because you will win. Not only because of the batting lineup, I think the pitch बहुत अच्छी है। अब तक जितने भी गेम्स हुए हैं वहाँ पर जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है, that has been 174. एंड इनफैक्ट जब एक बार इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गेम हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने 248 रन मारे थे वहाँ पर, एंड उसके जवाब में इंग्लैंड 204। सो इट इज़ अ वेरी हाई स्कोरिंग ग्राउंड, बहुत अच्छी पिच है। एंड जो वहाँ पे एवरेज रन पर ओवर है वो है 8.62। सो यू नो ऑल दिस इम्प्लाइज ओनली वन थिंग, दैट जब भी आपको ये ऑप्शन आता है ओवर 145, मेक श्योर यू बेट ऑन इट बिकॉज इट इज़ अ लो रिस्क, it will give you low return, but it is completely worth it. So make sure you put on it. All right. Tip number 2, total match sixes. I will recommend you to put over 8. Currently, Bet365 is giving you that option with a good rate of return for a very simple reason. क्योंकि both England and Australia has very strong hard hitters in form of Warner, Smith, Finch, Ian Morgan, Bairstow, Bottler. सब बहुत अच्छे बैट्समैन हैं जो बहुत आराम से फील्ड को क्रॉस कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू बेट ऑन दैट। अब तक जो 5 गेम्स T20Is हुए हैं इस ग्राउंड में, उसमें अब तक 53 सिक्सेस गए हैं एंड द एवरेज इज़ 9 पर मैच। सो आई एम वेरी श्योर दैट अगर आप इस पे बेट लगाएंगे यू विल विन। सो मेरे हिसाब से इट इज़ ऑल्सो लो रिस्क विद अ गुड रिटर्न। टिप नंबर 3, मैच 50। येस, बिकॉज अब तक जो 5 गेम्स खेले गए हैं यहाँ पर, एक्सेप्ट द फर्स्ट गेम, जो बाकी के चारों गेम्स थे, दे हैव हैड 50s इन एवरी सिंगल गेम। इनफैक्ट 2 गेम्स में तो 2 50s गई थे। एंड विद द काइंड ऑफ बैटिंग लाइनअप वी हैव, द बिच we have, there is no way 50 नहीं होगा। इनफैक्ट अब तक जो मैंने आपको सारे टिप्स बताई हैं, ये मेरी फेवरेट है। it has a return of 1.16 right now being given on Bet365, but this for sure out of 100%, 99% there will be a 50. so अगर आपको एक बेट लगानी है और अगर आपको सेफ बेट लगानी है, लो रिस्क बेट लगानी है, this is the bet that you should put on. I am very certain ये आप ज़रूर जीतेंगे अगर आप जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा फॉलो करेंगे। टिप नंबर 4, नाउ दिस इज़ अ हाई रिस्क। जनरली मैं ये कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता टू पुट अ मैच विनर बिफोर द गेम स्टार्ट्स बिकॉज यू रियली डोंट नो हाउ द गेम विल टर्न आउट टू बी। क्रिकेट इज़ अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल गेम, बट देर आर रीजन्स जिसको देखकर मुझे लगता है दैट दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। सो वो ये है कि इस वक्त आप इंग्लैंड पे लगाइएगा फॉर कपल ऑफ रीजंस। दैट्स वन, दैट दे आर एन इन फॉर्म टीम राइट नाउ। बहुत दिनों से वो गेम खेल रहे हैं। रिसेंटली दे प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान, so the players are in form, whereas Australia, they haven't played cricket for now 6-7 months, so the players will be rusty. So first game definitely they are not going to do well, and by the time they'll pick it up, I'm sure they'll win a game out of 3, but out of 3 games definitely England is going to win the series. So 3 out of 2 times you're definitely going to win, so make sure you bet on England. Plus इंग्लैंड की जो बॉलिंग लाइनअप है, आई थिंक इट्स मच स्ट्रॉन्गर विद नाउ जोफ्रा आर्चर कमिंग बैक इन द टीम, सो दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड ऑफ कोर्स इंग्लैंड हैज़ द एडवांटेज ऑफ being playing at the home condition. So this is definitely a plus advantage for England. So out of 3 games, I'm very certain England will win
the series and they'll win 2 out of 3 for sure. So make sure you bet on that as well. And tip number 5, second inning match winner. Now what it means is that once the first inning is over, you can look into the score and then you can bet accordingly for those who like to bet once the game gets started, and that's what I generally recommend. So what I suggest you is, just in case the first inning does not do well, जहाँ पर the score is limited below 140, 130, 145, as you can see here, जो दो last T20s हुए थे 2016 और 2017 में versus England, Sri Lanka and South Africa when they got bowled out at 140 and 142 respectively, दोनों गेम इंग्लैंड ने बहुत आसानी से जीत लिया था. What it means to say is कि अगर आप 140 स्कोर के, it is certainly a below par score and doesn't matter which bowling lineup it is, you know, the other team, especially a team like England, will not let you win. So मेक श्योर अगर आप you're one of those जो गेम्स के बीच में बेट लगाता है, in case that first team, which is Australia, if they don't score above 150, 160, and if they get bowled out by 140, 45, there is a very good probability that England will easily chase them. So it is, of course, now game can turn around, so it is a medium risk. But I will recommend you, अगर आपको ऐसा कोई गेम खेलना ही है, so look at that figure 140, 45 and then bet accordingly. Alright, I hope मेरे ये 5 बताए गए tips will be very useful for you. I hope इस series से आप कुछ पैसा कमा पाएंगे through my tips. अगर आप पैसा कमाएं, so please write it down in the comment, that really makes me feel good. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, like and share with friends and family जो betting करते हैं. And please अब तक अगर आपने subscribe नहीं किया है, do subscribe to the channel because there's lots more cricket coming up and lot more betting tip as well. And don't forget IPL is coming as well. Alright, चलिए, I will see you soon. Until then, खुदा हाफिज़, ciao ciao, वालेकुम.